सो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? थोड़ा बताइए, मतलब हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिटन मेंस इन द पास्ट? आप लोग, आपने लिखा हुआ है, नाइस. अ फ्यू ऑफ यू हैव रिटन मेंस, ओके. तो in this session we primarily want to focus on the next 4 months, and we'll start with why it is so crucial, why these 4 months are kind of make or break months. Because देखो, when we talk about real improvement doesn't happen in panic mode. जो प्री और मेंस के बीच में होता है ना, that is panic mode. For you may have seen many students who are writing mains every year without a lot of change. What happens there is they are putting in a lot of efforts between June, July, August. After that they wait for results. 2 months go, फिर रिजल्ट इंटरव्यू कॉल आ जाता है तो 2-3 महीने और जाते हैं. And then after that they again start preparing for preliminary examination. तो मेंस की जो प्रिपरेशन होती है, for them it's always between June to August. And again, in panic mode we are never able to make huge improvements. And that is why I feel like when I have seen toppers, when I have seen students getting selected with very good ranks, most of them were already very well prepared by 31st December. जैसे one of our students Archit said कि उसने जो सेमिनार लिया कि most important part, if you actually want to do very well in GS or very well in your mains preparation, is that by 31st December you should feel like सब कुछ हो गया है. पर क्यों? उसके कुछ एस्पेक्ट्स, कुछ रीजंस हैं. जैसे this is the time when we'll be able to differentiate between serious and non-serious candidates. देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च में आप लोग सब सीरियस हो गए. प्री के बाद अगर प्री हो जाता है, आप लोग सब सीरियस हो गए. अभी देयर इज नो प्रेशर, अभी देयर इज नो पैनिक. द वंस ऑफ यू हु विल बी serious in these 4-5 months will be the ones who are actually going to get selected. Otherwise, lakhs of people would be preparing, thousands of people would be preparing for mains between the next 7-8 months. जो जनवरी से अगस्त वाला फेज आएगा. Almost everyone, you will see libraries getting full. Everyone is putting in a lot of effort. You will not see that in the next 4 months, or you will not see almost everyone being serious or disciplined. Only a few people whom you would start recognizing in the beginning only, यार ये बच्चा बड़ा sincerely पढ़ रहा है. So it is important to focus on our preparation very systematically in these 4 months, because it will make you someone who is way ahead of the competition, or who is among that crowd. Second thing is, if you are prepared, fully prepared, like many of you have not written mains, इसका मतलब है prelims में भी कुछ challenges आते हैं, right? When we start preparing for prelims, let's say in January or February, in March, when we start preparing for prelims, and when our mains is not ready, at the back of our mind there's always this doubt कि यार थोड़ा मेंस कर लूं क्या, 2-3 आवर्स निकाल के मेंस करूं क्या, ऑप्शनल तो हुआ ही नहीं आधा, एथिक्स पेंडिंग है, सोसाइटी सोशल जस्टिस नहीं हुआ है, लाइक will I be able to do mains after preliminary examination? So this anxiety, this panic hampers our preliminary examination preparation also. We should be like, after January, if we are not doing well in prelims test, we should not worry about mains. कि mains तो हो रखा है यार. Prioritize. If you, they say, there would be some of you who are scoring 140, 114 mock test in preliminary examination. To them, we recommend keep on revising mains even after January. But again, coming back to your preparation would be better in future phases if you are able to dedicate, you are able to remain dedicated, if you are able to remain focused in the next 4 months. Again, मैं अभी शायद ना लास्ट ईयर हमारे पास मेंस मास्टर्स प्रोग्राम में 500 बच्चे पढ़ रहे थे, जो ये वाला फेज था. लास्ट ईयर we started our one program, mains master program, on 30th September, right after mains examination. Not everyone was serious, not everyone was disciplined, and thus not everyone would be doing well. तो आप में से भी students would be there who will request कि sir
कोर्स का एक्सटेंशन बढ़ाओ सर, क्योंकि आप डिसिप्लिन नहीं रहे हो। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, इफ यू वांट टू prepare without a lot of anxiety, without a lot of stress for your prelims and again for your mains, after your prelims you'll again prepare for mains, you'll revise everything. At that time, when you don't have new things to do, when you only have current updates to do, you'll be what? You'll be less stressed, less anxious, and your performance would be better. Then I also say that this is the time for deeper understanding. See, when you have some major topic remaining, right before mains, you won't be able to do that. You will do it superficially only. कि यार बस इससे हो जाएगा आंसर, I have to write a test this Sunday. Right? Many of you may have appeared in the examination. Someone tells you, यार history में ये नहीं आता. You say, यार ये 5 points देख लिए, चलो हो गया. अभी we don't have time for that. We don't have time for anything else. This is the time where we can actually identify lacunas कि यार preparation में, even after foundation and everything, these are the shortcomings we can focus upon and we can remove that. This people think they'll be able to do after prelims, but after prelims, no. If you give 2 days for one particular topic, that will be a idiotic thing to do. है ना, उस particular topic से question आए ना आए और एक major time उस पे दे दिया. Whereas right now, in these 4 months, if you identify, okay, these are the major areas which are very bad for me, I will strengthen it. You will be able to give more time to it and you will be able to do better. तो जो मैं बोलता हूं कि ना, जो रियल इंप्रूवमेंट होता है बच्चों की प्रिपरेशन में, वो अभी होता है. प्रीलिम्स से पहले, मेंस से पहले, इट्स जस्ट टारगेट्स पूरे कर लो, पूरे कर लो, पूरे कर लो. व्हेन आई टॉक अबाउट आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट, प्री और मेंस के बीच में जो आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट होता है, दैट इज जस्ट स्पीड अच्छी हो गई बिकॉज यू राइटिंग अ लॉट ऑफ टेस्ट. जो कोर चेंजेस होने चाहिए आंसर में, कि यार आप डिमांड समझ भी पा रहे हो कि नहीं, आपके स्ट्रक्चर में देयर आर सम फंडामेंटल फ्लॉज व्हिच इज मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर एग्जामिनर टू रीड योर आंसर्स. Those we do not make drastic changes in that period. Even if students come with some very bad answers, no, we don't want the students' methods to change drastically within a period of 1 month or 2 months. Otherwise, there will be losses. वो दूसरे मेथड पे शिफ्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, और उस चक्कर में सब गड़बड़ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, एसए इज वन एरिया. एसए में क्या होता है, वी हैव स्टूडेंट्स जो 120 130 स्कोर कर रहे हैं, फिर उन्हें कोई बोलता है कि नहीं एसए में 140 लेके आना है. They go to a teacher and then teacher tries to mold that student in their method. In 1 month or 2 months, that molding doesn't happen, and the same student from 130 120 goes to 80 90. ऐसे I have many examples. मेरा एक student है आकाश, he became IPS this year. Last year वो Indian Forest Service में select हुआ था. उसके first attempt में essay में बिना कुछ efforts करे, बिना systematic simple भाषा में लिख के आया, he got 120 125. Next essay में he got 90. Why did he get 90? Because between prelims and mains, this time he went to a teacher. The teacher had his own way of writing essays. He asked him to change the entire methodology and he was not able to. I'm not saying the teacher was bad. He was not able to move on to this method. तो ना तो वो घर का रह गया, ना वो घाट का रह गया, एंड नंबर्स रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली. तो अगर कुछ बड़ा चेंज करना है, कुछ फंडामेंटल चेंज करना है, वी हैव टू आइडेंटिफाई शॉर्टकमिंग्स नाउ एंड वी हैव टू मेक दोस चेंजेस नाउ. इट वोंट बी पॉसिबल in that period. In that period, I personally do not make a lot of changes in students' methodologies. जो method है उनका, उनको ही improve करने की कोशिश करते हैं. Because in 2 months, if you start trying to make changes, there are so many things that a student has to do. It ends up having negative impact also, because not everyone is able to absorb things that quickly. Not everyone is able to understand the changes that easily, and that is why I refer to this period. ये जो 4 महीने हैं, this is your make or break period for your mains preparation. जो बच्चे मल्टीपल मेंस लिखते आए हैं, जो बच्चे एक बार भी प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, उन सब के लिए इफ यू वांट टू डू वेल इन मेंस, प्लीज इंश्योर दैट बाय 31st December फॉर बोथ योर ऑप्शनल
as well as GS plus essay. There are some fundamental things that you have completed. What are those fundamental things? What are the key targets that we should have? That is, I want all of you to be in a position. आप कहीं से भी पढ़ें, कैसे भी पढ़ें, these are the 5 things that you should be doing for both GS and essay. Like for the next 4 months, I'll talk about these points, but for the next 4 months, give 50% of your study time for optional. First half of the day may be for optional. Let's say you get up at 6 in the morning. मैं बोलता हूँ 6 बजे से 2 बजे तक जितना पढ़ोगे, 6 AM to 2 PM. Give it for optional. In this period of 8 hours, you'll be able to study for 4-5 hours perhaps. 4 hours तो पढ़ना पड़ेगा. If you're studying full time, you cannot study less than that. So 4 to 5 hours, you'll be studying in this period. Give it for your optional. After 2 PM, prioritize GS. करना क्या होता है? 5 चीजें. अब now you may be able to do 3 of them and you may leave something for after preliminary examination, but if you go systematically, you will be able to do all 5 things in this period only when you are disciplined. होता क्या है ना, when you make a rule कि I have to finish optional, I have to finish these things in optional by 2 PM, आप थोड़ा डाइवर्ट हो जाते हो, वो कर नहीं पाते हो, फिर 2 PM के बाद भी आप you'll keep doing optional, then that day's GS targets get affected and everything just becomes hodgepodge. So if you are disciplined, you'll be able to achieve all the 5 targets. If you are not, and I'm not saying we'll need to study for 16 hours a day. That's a stupid thing to do. I don't know, हमें बचपन में ऐसा बोला जाता था कि IAS की तैयारी कर रहे हो, 16 घंटे पढ़ रहे होगे, ये सब बकवास चीज है. Human brain is not made for 16 hours of 16 hours ना आप सरकारी क्लरिकल काम कर सकते हो, सेम चीज रिपीट कर सकते हो, बट यू कैन नॉट एक्चुअली स्टडी फॉर 16 hours, है ना. तो जस्ट 8 to 10 hours, 4 to 5 hours फॉर ऑप्शनल, 4 to 5 hours फॉर GS, मिनिमम 8. अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हो, फुल टाइम, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फुल टाइम, इफ यू आर प्रिपेयरिंग पार्ट टाइम, दैट इज इफ यू हैव जॉब, एंश्योर दैट 5-6 hours you still are studying every day, and then on Saturday Sunday more time. So what are the things that we need to target? What are the 5 things, and in this order, that we should be doing? पहला चीज है finishing syllabus. What is meant by finishing syllabus? It should mean that जो आपके सामने syllabus चिपका हुआ है, उस पे कहीं पे भी I point this thing, you should be like, okay, I have my notes ready. Through these notes, I can complete all the PYQs. And I know it all. आप पूछ लो कुछ भी. This is the first step. Now देखो, syllabus, completing syllabus sometimes becomes very difficult. मैं बताता हूँ. When we do not understand the syllabus properly. For example, एक syllabus में topic है cropping pattern, है ना? Because I teach GS3, तो मैं उसका example लेता हूँ, cropping pattern. Now, as an agriculturalist or as someone who has been teaching economy for a long period but who doesn't understand UPSC syllabus properly, that person would say, आपको cropping pattern में ना इंडिया का agricultural cropping pattern समझना होगा. Wheat का cultivation कहाँ होता है, क्या weather conditions required है, कितना होता है, how much is rice cultivation, what is the weather condition required, how much rice do we produce, those kind of things. But if you'll understand syllabus, if you'll decipher syllabus properly, it would mean पहले ना syllabus तो देख लिया, उससे भी understand कि cropping pattern का मतलब ये है. But look at the PYQs of last 10 years, and you'll realize those questions जो cropping pattern का core मतलब है, UPSC is not asking that, and that is why for every crop you do not have to create cropping pattern. Are you getting what I'm trying to say? तो understand syllabus. Understanding के लिए what would be very crucial? Syllabus wise, look at the PYQs. जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि syllabus and take hint from PYQs. Else, separation of power in itself can mean anything. People can do PhDs only on कि government और judiciary का क्या, ये executive और judiciary का क्या relation है, वो separation of power में ही पढ़ रहे हैं. But how much do we need to study it? How much, in what areas of cropping pattern do we need to cover? It will depend on
एनालाइजिंग PYQs. एंड एक मिसकंसेप्शन ये होता है कि यार 2014-13 में सिलेबस चेंज हुआ, तो व्हाट अबाउट स्टूडेंट्स हु आर राइटिंग एग्जाम इन 2014-15, वर दे एबल टू एनालाइज PYQs? दो स्टूडेंट्स डिडंट. एट दैट टाइम यू विल सी जीएस का स्कोर ना 500-600 कट ऑफ कुछ ऐसा जाता था. तो जीएस का स्कोर पूरा मेंस का कट ऑफ 500-600 के आसपास से आता था. बट when as a teacher I analyze now, even the older PYQs were equally relevant. वही चीजें पूछी जा रही थी, क्रॉपिंग पैटर्न के वही चेंजेस पूछे जा रहे थे, दो दे वर आस्क्ड लेस बिकॉज बिफोर 2013 when there were two optionals, so GS had very less weightage, but even those people could have analyzed it. But now we to have, since 2013 we've had 13 exams now, है ना? 2013 से 2022 तक 10 exams, 23, 24, 25, we have 13 exams now. We can clearly decipher what is UPSC focusing upon. I'm not saying we should not do anything else, but our priority should be understanding what is UPSC focusing upon. तो आपको syllabus cover करने के लिए biggest hint will come from PYQ. Your biggest tools in this preparation or biggest asset in this preparation would be these two things. जो एक सिस्टम है ना कि some students have spent 5 years, 6 years, 7 years in ORN, but still if we ask them ये वाला सिलेबस का बुलेट पॉइंट पूरा है, जैसे कि नहीं ये तो पढ़ाई नहीं है, ये आता ही नहीं है. उसका रीजन ही ये है कि even the teachers who have been teaching have not made them realize कि भाई ऐसे पढ़ना है, right? तो first target that we have to achieve is we have to complete every bullet point of the syllabus. उसमें कैसे? We will take hint from PYQs to understand what the syllabus is. We will create content for every topic. We should have crisp, concise content, and after we have crisp, concise content, we should have a framework for every topic. अगर क्रॉपिंग पैटर्न पे क्वेश्चन आता है, या चलो क्रॉपिंग पैटर्न ज्यादा हो गया, लेट मी टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर में वी हैव सिलेबस में इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी, रोडवेज, रेलवेज, पोर्ट्स, ऐसे ये सब मेंशन्ड है, एंड देन इन्वेस्टमेंट मॉडल. तो यू विल सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस सेक्शन ऑफ द सिलेबस इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. पिछले 13 साल में 5 बार क्वेश्चन, इन लास्ट 13 years 5 questions have been about public private partnership. If you analyze those questions properly, you will see more or less same dimensions have to be discussed. तो public private partnership के आंसर में what are the key challenges, what are the key solutions, सब में उसी तरीके की चीजें पूछी गई हैं. Why don't we have a template or framework ready in advance? क्रॉपिंग पैटर्न में अगर क्रॉपिंग पैटर्न, जैसे if you go to GS1, they've asked questions like what are the climatic condition required for tea cultivation. After 2013 they've asked that. So for some questions we do study the cropping pattern वैसे traditional वाला, but have framework ready. I'll talk about climate, I'll talk about soil, I'll talk about human resource. Some crops may need cheap labor, जैसे कॉटन के केस में या टी के केस में या कॉफी के केस में they require cheap labor also. I'll talk about these dimensions. सोचना नहीं है, अब वीट पे आ जाए सवाल, rather than worrying about oh I'm not prepared for wheat. So climatic condition क्या है वीट की? अच्छा रबी क्रॉप है, ड्राई कंडीशंस, कूलर कंडीशंस and some irrigation. Even if you have not studied for wheat, but when you have a template ready, you'll be able to create dimensions. Infrastructure, forget what they're asking, whether they're asking railways, roadways, waterways, वो तो कर लेंगे, but एक इंफ्रास्ट्रक्चर का आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ लिया, एक टेम्पलेट बना लो उससे कि यार इंफ्रास्ट्रक्चर में फर्स्ट मेजर प्रॉब्लम इज फंडिंग. हाउ डू वी गेट मनी? फंड कंस्ट्रेन is a major issue. Second thing you can talk about is problems in public private partnership. कोई भी infrastructure हो, be it roadways, railways, waterways, issues in public private partnership. Then you can talk about technology, you can talk about shortage of human resource. अब पता है ये जो फ्रेमवर्क आप 5-6 टॉप पॉइंट्स का बना के रखोगे ना, देयर मे बी सम अदर एस्पेक्ट, जैसे बिकॉज tragedy occurred in aviation sector, in our answer we will talk about एक चैलेंज जो हम
एयरवेज में फेस कर रहे हैं वो है अबाउट ensuring aviation safety. There would be some specific things also coming, but my point is if you have 5-6 point का template ready, roadways आए, railways आए, waterways आए, you're not prepared, you have forgotten things, you will not forget the template. If I talk about disaster management for that matter, क्या डिजास्टर मैनेजमेंट है? अब मैं जब डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ाता हूं, आई फर्स्ट टेक 1 hour टू कवर द फ्रेमवर्क एंड देन आई विल से शो कि इन एवरी डिजास्टर द सेम फ्रेमवर्क इज यूजेबल. तो एक ना कंटेंट प्रिपेयर करना होता है. कंटेंट प्रिपेयर करने का मतलब है कि यार सारे टॉपिक्स प्रिपेयर्ड है मेरे, बट इन क्रॉपिंग पैटर्न इफ यू हैव 15 different things to be covered, if you are not able to identify the broad framework in which you will cover those 15 topics, what you'll end up doing is उन 15 टॉपिक्स को इंडिविजुअली रटने के चक्कर में पूरा प्रिपरेशन खराब होगा. तो प्रिपेयर दोस 15 टॉपिक्स बट देन फोकस ऑन creating a framework, and it is that framework that for every topic we reach, first think of the framework and उनके पॉइंट सोचो, then go ahead. तो this is the first part only कि आपका सिलेबस का एक बुलेट पॉइंट कवर्ड होना चाहिए. कैसे, how much to be covered, take hint from PYQs. Once you feel like हाँ मैंने सब कर लिया है, focus on कि यार इंफ्रास्ट्रक्चर में these are the major infrastructure issues I have studied. What is the broad framework that I can take out which is common in all the infrastructure issues? Once you have that, you will see मेंस में आंसर लिखना would be very easy. देखो एवरेज आंसर पे you get 4 out of 10, 100 out of 250. And if you have broad framework ready, you'll be able to write at least an average answer. We'll also write very good answer, excellent answers. But हमारा सबसे खराब आंसर भी क्या होना चाहिए? Average होना चाहिए. And that would happen when you have specific templates ready. We will explain how those templates are created. We will talk about those dimensions also. Then quick revision notes. This is again very important. We cannot keep on reading bulky books. आपने कोई चीज किसी किताब से प्रिपेयर करी है, sometimes you may do that. आपने कोई चीज किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट से प्रिपेयर करी है, if that is bulky, ensure that after studying that thing 2-3 times, after absorbing it properly, you are summarizing that in the form of a few keywords so that you will be able to revise it quickly. Any source which is big, don't think कि यार मैं इसी से रिवाइज करूंगा, नहीं. If sometimes sources can be like, I personally prefer to give notes in question answer format with proper heading and subheading. अब मैं बच्चों से बोलता हूँ subheading ही रिवाइज करोगे. That is your short notes के keyword. You can either do it here or you can write it on a page and make your short notes there. But not every source, not every teacher may be following this, and thus you may need to create short notes. With this, your first task would be done. What will be the first task? कि यार मेरा सिलेबस हो गया. आप कहीं भी पॉइंट कर दो, अभी मुझे याद भी नहीं है तो क्या हुआ, मुझे फ्रेमवर्क तो पता ही है ना. I'll give you an average. अभी I have not revised it for 2 months, no problem, but still I'll give you an average answer. If I had revised it, I would have given you an excellent answer. One thing that we should be able to achieve is this. Now with this you should also be able to write all the PYQs. अगर all the relevant PYQs, कई बार some PYQs are irrelevant. Sometimes students come to me and say, sir, 2014 में this question on e-commerce had come. I tell them कि बेटा, it was in news at that time, that's why they have asked it. That's not relevant for today. Today you focus on today's current affairs. तो जो relevant PYQs हैं कि FDI में क्या challenges हैं, those kind of questions have been asked in the past. That is relevant even for today. So you should be in a position to answer each and every PYQ, relevant PYQ. But again, this will not be enough to be like confident. You should be doing a lot of answer writing practice. A general rule in a month, write 100, other than writing tests, write 100 answers, like 3-4 answer rows, likho compulsorily. In fact, in our mains masters program, first thing that we do, 5 बजे से 6 बजे के बीच में, between 5 PM and 6 PM, we give 40 minutes to students for writing 4 answers. For those of you who will be doing mains masters program with us, you'll come here at 5 PM and you'll see what?
4 questions displayed on the board. You'll first write those answers, and in 20 minutes we will have discussions on it. Like we will understand various ways of writing introduction. In this particular kind of question, what kind of introduction is most suitable? Why? How can we generate points for the topics or dimensions that we haven't studied? आपने हर आंसर का हर डायमेंशन नहीं पढ़ रखा होगा, फिर भी कॉमन सेंस यूज करके वी कैन जनरेट डायमेंशंस. We'll discuss all these things. So every day you will 40 minutes के लिए you will be writing answers, and then in discussion we'll have more brainstorming on them. If you keep doing this, you will yourself feel more confident in answer writing. So we have to write around 100 answers every month for self practice. So 100 answers every month would mean कि if you have 25 days, four answers every day. If you have 30 days, 3 to 4 answers every day you should be writing. Without it, a person with the best knowledge, person with the most beautiful language, person with a PhD level understanding of cropping pattern will not fetch the highest marks on cropping pattern question also. चाहे उसको कितना भी आता हो, if the person has not done enough answer writing practice, if the person has not understood कि when we are writing answer in 150 words and 250 words, what are the limitations that we face. एक person जो cropping pattern पे PhD कर रहा है इंडिया में, उसको दे दो आप यूपीएससी का एक क्वेश्चन एक आंसर लिखने को, वो कचरा कर देगा. Why would that be? Because that person would not understand, okay, I have only 150 words, I should be covering more dimensions, मेरे पॉइंट्स छोटे होने चाहिए, they should be easily readable, there should be proper heading, subheading. That person would not, that person knows a lot. तो वो सोचेगा मैंने सबसे अच्छा ज्ञान दिया, मुझे नंबर मिलने चाहिए. रियल वर्ल्ड में that should happen, but that is not how UPSC evaluates paper. If you write one dimension and discuss it very elaborately, you write 10 dimensions and discuss it very shortly, the 10 dimension वाले को अच्छे मार्क्स मिलेंगे. तो that you develop, that you learn. Where? When you are writing answers. When you're writing answers, you'll realize जबरदस्ती का ज्ञान नहीं चाहिए. दोस्त बोल रहा है कि नई किताब है, बहुत अच्छी है, नए कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, बहुत अच्छा है. आप बोलो भाई मुझे 6 पॉइंट 7 पॉइंट 8 पॉइंट्स लिखने हैं, उसमें उतना मेरे पास है. I do not unnecessarily want to burden myself, and that you will know when you're writing answers. When you're writing answers, you'll realize यार 7 मिनट में इतना ही तो लिख सकते हैं. Why do I need to have more content? Right? So 100 answers every month in next 4 months. Please ensure 300 to 400 answers आप लिख रहे हो. Then you should also be ensuring, देखो syllabus PYQs will help you understand, cover the basic things, but जो non-relevant questions है ना, they'll help you understand कि यार कुछ current based चीजें भी आती है. There are some, I said कि e-commerce वाला एक क्वेश्चन आया 2014-15 में, कभी वो अभी के लिए हमारे लिए relevant नहीं है, but that helped us understand कि यार UPSC asks these kind of questions also. So other than the things which are there in syllabus, अब if you'll ask me, internationalization of rupee is not anywhere mentioned in the syllabus. External sector mains के syllabus में नहीं है. But should we be preparing it? Yes, we should be preparing it. So do all current affairs value addition for mains, but कोशिश करो से syllabus wise ही करो. And if possible, अगर possible होता है, write a test every Sunday. Daily answer writing is different, but writing in that exam environment, so over the next 16 weeks, writing at least 16 tests, that is something that is needed. You may not be able to do all of this. Please, again, सब कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ बच्चे कर भी लेंगे. But my point is, eventually, this is what you will have to do. First half of the day में for optional, second half of the day में for GS. कहीं भी पढ़ रहे हो, कैसे भी पढ़ रहे हो, optional, syllabus PYQs देख के समझो. Do I have notes for every bullet point? Am I able to write all the PYQs? Second वाला, write 3-4 answers every day to understand whether you're able to write enough things. अगर आपका optional वैसा है जिसमें current updates are relevant, जैसे if it's PSIR, a lot of current updates may be needed. Work on that also,
and if possible have a test series. But I recommend, unless you're writing 3-4 answers daily, unless you feel like I can complete all the PYQs or you have written PYQs, don't join a test series. Test series is a business which thrives on people not being able to complete their syllabus and skipping their tests. जो ये वाले टेस्ट सीरीज होते हैं ना, जो अभी मेंस के बाद लॉन्च होंगे फॉर नेक्स्ट 1 year, only 10% ऑफ द पेपर्स आर अटेम्प्टेड. फॉरगेट दैट. प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो टेस्ट सीरीज होता है, do you know what percentage of papers are actually attempted? People who are writing mains, 20 to 25%. तो do not run behind test. Do it only when आप सिलेबस कर, आपके पास सबके नोट्स हैं प्रॉपरली, आप PYQ सारे लिख पा, you are able to write all the PYQs, you're doing some answer writing practice, and you feel like whatever is the syllabus on this Sunday, I have it prepared, I'll revise it and I'll give the test. I'll revise it and I'll give the test. एक वो जो कल्चर है ना, join a test series and study according to that. Following the test series is very difficult. So unless the test series, unless you're like, I'm already prepared, I will have to revise and give test, don't join a test series. We'll do it between prelims and mains. We're anyways doing a lot of answer writing practice. 300 to 400 answers means 15 test ho gaye over the next 15-16 months. Are we able to understand this? So देखो, दो चीजें. I have basically focused on two things. One, why these 4 months are important. If you really want to create a differentiation, January के बाद you won't be creating that differentiation. Pre के बाद you won't be, because pre के बाद, if both of you, if 2 of you are at level X, both of you will be actually putting in equal efforts. किसी को थोड़ा अच्छा गाइडेंस मिल जाएगा, किसी को नहीं मिलेगा, but you won't be able to create a lot of difference, because एग्जाम्स टेस्ट में सब पढ़ते हैं. एग्जाम से एक दिन पहले क्लास में जो सबसे नालायक बच्चा है वो भी पढ़ रहा होता है, और क्लास में जो सबसे सिंसियर बच्चा है वो भी पढ़ रहा होता है. बट सिंसियर बच्चा इज एबल टू डू वेल बिकॉज वो पहले से पढ़ा हुआ है, पहले से प्रिपेयर्ड है, वो लास्ट डे रिविजन कर रहा है. तो यू वोंट बी, आपको लगेगा, यू थिंक कि नहीं, आई एम वेरी सिंसियर इन लाइफ, इन दोस 2 months आग लगा देंगे. नहीं, एग्जाम से पहले सबका ऐसा होता है, सब आग लगाने बैठे हैं. Everyone, no matter what the background is, no matter what the situation is, everyone is like, यही करेंगे. तो these 4 months एक एक करके करना शुरू करो. This is the first bullet point of the syllabus I want to cover. Let me look at PYQs. Let me see मेरे पास सबके 1 page में notes है कि नहीं, जो I'll be able to quickly revise. And once I have that, disaster management हो गया. Disaster management का broad framework क्या है? जैसे in my case, when I'll teach disaster management, मैं पहले framework करवाऊंगा, फिर मैं सारे points उसमें fit करूंगा कि भाई यही framework है. हम 15 अलग अलग disasters पढ़ेंगे, but broadly this is the order which we have to follow. So in every disaster we will first revise the framework, so that disaster management पे कभी सवाल आएगा, you will never have to worry. You will be like, I'm ready. Data में change, examples में change, committee reports में change, but broad points would remain similar. Now some of you may have this doubt कि यार, if I'll write same thing in every answer, won't it be a lot of repetition? बेटा, disaster management का एक ही तो सवाल आएगा ना. For 15 disaster management topic we are creating a framework. For cropping pattern topic we are creating a framework. Cropping pattern पे एक ही सवाल आएगा ना. So it's not like your answer in cropping pattern and disaster management, internal security, they're all same. No, सबके लिए framework would be slightly different. Internal security में we may have to focus on different dimensions. Economic growth में we have to focus on different dimensions. I hope we are understanding what I'm trying to say here. तो ये चीजें करनी है. कैसे करनी है वो आप लोग डिसाइड करेंगे. If you'll need our help, we'll be available for that. But these are the things that you have to do in order to be actually ready, in order to ensure that आप आगे next 7-8 months, January to August में actually सही डायरेक्शन में, बिना घबराए हुए, बिना परेशान हुए
चल रहे हैं। नाउ कुछ और चीजें हैं जो आप ध्यान से समझो। देखो, डिसिप्लिन इज वे मोर इंपॉर्टेंट देन मोटिवेशन। ये ना, एक बार एक रात मूवी देख ली और कुछ मोटिवेशनल देख लिया और अगले दिन बैठ के 12 घंटे पढ़ाई कर ली, कुछ नहीं होने का है। क्रिएट अ शेड्यूल, stick to it. That schedule may have only 8 hours of study every day. Stick to it. You will know ki for my optional I only have 4 hours and this is the thing that I have to prepare. The moment आप उसको 8 घंटा दे रहे हो ना, your work will extend to fill your time. When you know you have less time, you will finish it in less time. You become more efficient as the deadline approaches. तो have a disciplined schedule. Disciplined schedule का मतलब क्या होता है? Disciplined schedule का मतलब होता है कि भाई आई एम गेटिंग अप एट 6, मेरा पढ़ने का टाइम मैंने 8 बजे से रखा है, लेट मी जस्ट डू दैट टू 8 to 10 AM. आई एम गोइंग टू स्टडी नो मैटर व्हाट. इन 8 to 10 AM पीरियड आई एम कीपिंग माई फोन असाइड, आई एम नॉट पिकिंग अप कॉल, किसी का भी हो. आई ऑलरेडी टेल माई पेरेंट्स, उनका ही कॉल हम नहीं उठा सकने वाली सिचुएशन कि दीज आर माई स्टडी आवर्स, आई वोंट पिक अप कॉल्स, तो डोंट वरी. ऐसे ना, when I don't pick up calls for 1 hour, my parents get worried कि क्या हो गया ऐसे. उन्हें पता होगा ये पढ़ने वाला टाइम है, नहीं पिकअप कर रहा है. They themselves will ensure that those periods are not. तो 8 to 10 आपका पढ़ने का टाइम है, 10:30 to 12:30 आपका पढ़ने का टाइम है. प्लीज मेक श्योर कि बस ये 4 घंटे ही पढ़ने. सुबह 6 बजे से 2 बजे के बीच में पढ़ा जा सकता है, बट विदाउट अ प्रॉपर डिसिप्लिन शेड्यूल हमें लगता है कि हम सुबह उठ के गए हैं लाइब्रेरी और पूरे टाइम पढ़ रहे, नहीं पढ़ रहे होते. And when I say that those 2 hours should be without any disturbance. I'll tell you एक scam जो हम अपने साथ कभी all of us do with ourselves. We are studying and then a friend comes and asks doubts on the same topic that we are studying. And we are like, हाँ पढ़ाई की तो बात हो रही है. We start discussing that. कुछ अच्छे points भी निकलते हो जाता है. But please understand, that was not what you're supposed to do. In those 2 hours, you had kept a target for yourself. You didn't do that. Rather you had some discussion. आप जो पढ़ रहे थे वो flow break हुआ. You were developing a process to think on a particular topic. That got broken. Though you will think, okay, this 1 hour of discussion was useful, but that 1 hour of discussion could have happened at any time else, at on some other occasion. You may keep 1 hour of we are both flatmates, we are very sincere, so every day at 5 in the evening we'll bring all our doubts and we'll discuss. But 8 to 10, if that's my study ka time, I will not speak to anyone. और उसे वैसे फिक्स करो. I'm not saying 8 to 10. I'm saying अब जैसे you may have a cook coming at home, you know at what time there will be disturbance. When you have cook at home, आप जाके नहाओ धो सब करो ना. वो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कर रहे हो. When they are gone, now I will not be troubled. When your friends ask, आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हो, when friend asks you, चल सुट्टा मार के आते हैं. वैसे सुट्टा मारना नहीं चाहिए, है ना, बोल कि I'll not go in this period. Fix a time. मैं नहीं बोल रहा ब्रेक नहीं लेने हैं. Breaks are very important. Without, I do not understand the system of 16 hours of study and everything. You have to have 40-45 minutes of exercise every day. You have to have वो टाइम जब आप शांति से बैठ के लंबी सांसें ले रहे हो, पढ़ाई की टेंशन नहीं कर रहे हो. You will need all those things for 11 month journey. This is not CAT का एग्जाम की 2 महीने 3 महीने प्रैक्टिस करी, दे दिया, हो गया. This is a long marathon and you have to be relaxed, you have to be fit, you have to be focusing on your mental health also. So I'm not saying break should not be there. I'm just saying if you have decided you will study for 8 hours, then on those 8 hours you should just be studying. If you will not prioritize your preparation will not prioritize. अगर उसमें अपने दोस्त को प्रायोरिटाइज किया तो करो दोस्त को प्रायोरिटाइज, राइट. तो डिसिप्लिन इज मोर इंपॉर्टेंट देन मोटिवेशन. नो मैटर हाउ पॉजिटिव योर एटीट्यूड इज, नो मैटर हाउ good your intentions are, no matter how hardworking from your childhood you have been, आप में अगर डिसिप्लिन नहीं है, you will not clear this examination.
Second, revisions are more important than running behind multiple sources. See, from basic source, कोई बच्चा बस अपने क्लास के हैंडआउट्स पढ़ रहा है, जो भी आपने कहीं से भी पढ़ाई करी होगी, लेट्स से यू हैव स्टडीड फ्रॉम XYZ इंस्टीट्यूशन, आपने वहां पे हिस्ट्री के बस अपने क्लास के हैंडआउट्स पढ़े और एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा, पर बार बार यू हैव केप्ट ऑन रिवाइजिंग द सेम थिंग अगेन, you will do well in the examination rather than a person who has read 10 different sources and have not been able to effectively revise it. तो ये दो चीजें ना हम मिस करते हैं. A friend comes and says, भाई देख कितना बढ़िया नोट्स मिले हैं, and we are like, नए नोट्स पढ़ेंगे, हमारे खराब हो गए? अरे नहीं है खराब यार. देखो, स्टूडेंट्स आर गेटिंग सेलेक्टेड, ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स आर गेटिंग सेलेक्टेड आफ्टर स्टडिंग नोट्स ऑफ ओनली वन पर्टिकुलर टीचर. स्टूडेंट्स आर गेटिंग सेलेक्टेड इन एवरी डिफरेंट वे. आपको क्या करना है, वट एवर इज योर सोर्स, इट मे हैव सम शॉर्टकमिंग्स, बट यू विल रियलाइज देयर आर सम शॉर्टकमिंग्स, यू विल fill it. So revision is very important. Every day when you'll be very disciplined, you'll be able to revise. What I generally recommend कि भाई अगर रात में 12 बजे सोने का टाइम है, डिसिप्लिन का मतलब ये होता है, डिसिप्लिन का मतलब है रात में 12 बजे सोना है तो 12 बजे सोना है. When you will be disciplined, you will know कि रात में 12 बजे सोना है. At 11 you stop studying new things. 11 to 11:15 brush your teeth, prepare your bed. 11:15 to 12 before you go to bed, revise पूरे दिन में क्या किया. If you're writing tests on Sunday, Saturday give for revision. वहां पे आपका second revision होगा, because in that week you'll be preparing for that test only. ऐसे ही have monthly revision, 3 monthly revision का cycle. अभी recently एक आर्टिकल आया था हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में, उन्होंने भी इसको ही emphasize किया था कि scientifically it has been proved कि रिविजन के बिना कोई भी चीज रिटेन कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, चाहे एक बार में कितना अच्छा एक्सपीरियंस हो गया. रिवीजन इज द की. रिवीजन को प्रायोरिटाइज करो. कुछ सिलेबस का पोर्शन रह जाए कोई बात नहीं. सपोज यू आर स्टडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फॉर सम रीजन यू आर नॉट एबल टू कवर एयरवेज, कोई बात नहीं, बट जो किया है, एम आई वेरी गुड एट इट? बिकॉज वेन यू विल बी वेरी गुड एट रेस्ट ऑफ द थिंग्स, आपके पास फ्रेमवर्क रेडी होगा, आएगा एयरवेज पे सवाल लिख दोगे. ऑप्शनल में यू हैव टू अटेम्प्ट 5 out of 8 क्वेश्चंस. किस्मत अच्छी रही तो 60% सिलेबस, पर 60% इफ यू नो वेरी वेल, यू मे एक्चुअली बिकम द टॉपर ऑफ द सब्जेक्ट. आई एम नॉट सेइंग सिलेबस कंप्लीट नहीं करना चाहिए, बट माय पॉइंट इज डोंट रन बिहाइंड मल्टीपल थिंग्स. एक बार बेसिक लेवल पे कंप्लीट किया, उसे रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो. पीवाईक्यू से देखो अच्छा कुछ और डायमेंशंस ऐड करने हैं व्हिच इज मिसिंग. ओके, इन दोनों चीजों को बहुत ध्यान में रखना है. When you go on YouTube, when you go on, like I see this stupid thing happening, बच्चे ने पूरे साल पढ़ाई करी है, उसके नोट्स हैं, सब कुछ है, आखिरी में 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के कुछ नोट्स आए, उसके पीछे भाग रहे. यूपीएससी चेयरपर्सन उसका ससुरा है क्या, जो उसे बता रहा है 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये हैं? इज दैट पर्सन टेकिंग गारंटी कि दीज आर द 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक? आप बेवकूफ तो हो नहीं. साल फॉर द होल ईयर यू हैव वर्कड, you have realized what are the most important topics, and then someone else is telling you 10 days before examination, someone else is coming 10 days before examination, एक मैराथन सेशन करते हैं, दिन भर बैठ के हम मैराथन का. अरे आपके पास अपने नोट्स है ना, बैठो दिन भर रिवाइज करो. you know what is difficult, what is not difficult, you know what you do not understand well, उस पे emphasize करो, rather than वो same basic चीज दूसरे सोर्स से पढ़ रहे हो. सेम सोर्स अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस ये चीजें होती है. एक दो चीजों के बारे में मैं और बात करूंगा. योर स्लीप साइकिल इज इंपॉर्टेंट. इफ यू कैन नॉट डू दिस, यू विल नॉट बी एबल टू टेक बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. आप अगर अपना ध्यान नहीं रख पा रहे हो, आप अपने डिपार्टमेंट का, अपने डिस्ट्रिक्ट का ध्यान नहीं रख पाओगे. 6 to 8 hours of sleep. Not everyone has to sleep only for 6 hours. There are people who will need 7 hours of sleep. There are people who will need 8 hours of sleep. But after 8 hours of sleep also, you have 16 hours in a day. उस 16 hours को effectively use करना है. You cannot keep eating जो भी मन में आया, चलो आज छोले भटूरे खा के आ गए रोड के बगल में से. अभी खा के आए हो क्या? है? तो वही खाया था. You cannot keep on doing that.
है ना. You'll have to ensure that every day you're doing some physical activity and you'll have to do a lot of sacrifices. अब ऐसा है कि फेस्टिवल सीजन इज कमिंग, ऑलरेडी इट्स गोइंग ऑन, है ना. गणेश फेस्टिवल नहीं, हमारे घर में तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है. आई हैव टू गो. अगेन, इफ यू आर नॉट प्रायोरिटाइजिंग योर प्रिपरेशन विल नॉट प्रायोरिटाइज यू. कि दिवाली में एक दिन घर चले जाओ, ठीक है. अब नहीं, मैं दिवाली में जाऊंगा, छठ पूजा भी सेलिब्रेट करूंगा, और फिर मैं सिलेक्शन में भी चाहता हूं कि माय प्रिपरेशन शुड बी प्रायोरिटाइजिंग मी. नो, दे वुड नॉट. यू हैव गिवन टाइम टू समथिंग एल्स. भैया की शादी है, 20 दिन तो सेलिब्रेशन होगा. नहीं भाई, यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट. यू विल हैव टू डू सैक्रिफाइसेस. बिना सैक्रिफाइस के एलॉन मस्क को कुछ नहीं मिला, आप तो भूल जाओ. The biggest business person in the country also is not able to spend the kind of time he would want to spend with the family. आप चाह रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, मुझे लाइफ में सब कुछ चाहिए, सब कुछ नहीं मिलेगा. इस प्रिपरेशन फेज में इफ यू विल नॉट डू सैक्रिफाइसेस, तो ना वो 5 पॉइंट्स जो हमें कंप्लीट करने हैं, वी वोंट बी डूइंग दैट, एंड व्हेन वी वोंट बी डूइंग दैट, हम पीछे रहेंगे. Eventually it's competition. अब देखो, there's this movie 3 Idiots. I don't know how many of you have watched it. सबने देखा है? तो मैं अपने कॉलेज में था, फर्स्ट ईयर में, वो मूवी आई थी, और उसमें ना आमिर खान को दिखाया गया कि हाँ कितना अच्छा है. बट अब वायरस की कंडीशन समझो, वायरस का सिचुएशन समझो. यू आर इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन where only 1,000 people are going to get selected, even if 10,000 of you have the best of understanding. It is competition. आपको कोई बच्चा सिंसियरली रोज 8 घंटे पढ़ रहा है, आप भी पढ़ रहे हो, बट देन यू आर टेकिंग ब्रेक 20 दिन भैया की शादी में. 20 दिन में वो बच्चा जो आपके बराबर था आपसे आगे निकलेगा. फिर कितना भी कि मैं तो रेफ्रिजरेटर खोल के सीख रहा हूं, इंजीनियरिंग में दैट मेक्स सेंस, बट इन ऑर्डर टू गो देयर, आईआईटी जेई प्रिपरेशन कर रहे हो और वहां पे नहीं, मुझे एक्सपीरियंस लेना है. In order to understand how buoyancy work, let me go to a cruise. देखूंगा शिप में कैसे चल रहा है. Are we understanding what I'm trying to say? It is competition. You'll have to treat it like a competition. It is a competition where out of 10 lakh people, only 1,000 are going to eventually get selected. 10 lakh people who will fill the form, 5 lakh people who will appear for the examination, only 1,000 are going to get selected. आपको सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे. नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, पेरेंट्स के पास पैसे बहुत है, ओआरएन में खर्चा बहुत है. ओआरएन करोल बाग में लैंडलॉर्ड्स हमें भी लूट रहे हैं, आपको भी लूट रहे हैं. हाँ, जैसे वी एंड अप पेइंग 2 crore rupees फॉर दिस बिल्डिंग एवरी ईयर. ये बिल्डिंग यहां से थोड़ी दूर चले जाओ, इट विल बी वे चीपर. तो यू थिंक कि लैंडलॉर्ड्स से सिर्फ बच्चे परेशान है? ऐसा नहीं है. हम भी टॉर्चर, हमारा भी डिपॉजिट है. दैट डिपॉजिट अमाउंट इज 6 months ऑफ रेंट. नहीं दोगे, वो वापस नहीं करेंगे तो लिटिगेशन करते रहो, पैसे फंसे रहेंगे. समझ रहे हो? तो पैसे बहुत हैं, उड़ाने हैं, उड़ाते रहो, या फिर कुछ सैक्रिफाइसेस करो. हर चीज के लिए घर नहीं जाना है. अब हो सकता है बचपन से वी आर वेरी अटैच्ड टू आवर पेरेंट्स, बट इफ यू आर वेरी अटैच्ड टू योर पेरेंट्स, प्रायोरिटाइज देयर हैप्पीनेस इन लॉन्ग टर्म रादर देन जाके मुझे अभी मम्मी से गले मिलना है, मेरे को नहीं रहा जा रहा. Are we able to get this? Then all the best, है ना.